देखे क्रिकेट टीवी जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें जहां जोश भी है जहां होश भी है जहां क्रिकेट है आओ देखे क्रिकेट टीवी. If you have been following us, you know one thing: we do not chase noise. Here we break down the game the way actually you guys like it. Tonight it's all about Women's Premier League, a tournament that has quietly moved from promising to serious business. Short seasons, 5 teams, no easy games. And that's exactly why WPL works. I'm joined as always on Cricket TV by Nikhil Morsawala and Narayan Pasari. It's really great to have you both back. At Cricket TV, yes, sir. Welcome. Yeah, thank you. We like context before conclusions. The reason WPL feels intense is simple because it is very short. There are no buffers. In longer leagues, there are teams get time to recover, but here net run rate matters early on. Momentum starts early on. There's pressure on you if your first few games did not go well, and it follows you until the end. We have 5 great teams: Mumbai Indians, RCB, Delhi Capitals, Gujarat Titans, and UP Warriors. UP Warriors. Yes. Let's dive directly into it. From Mumbai Indians, let's start with the defending champion this season, last season. They won. Harmanpreet Kaur is leading Mumbai Indians. Nets Kevir Brunt, she is the most reliable run getter for Mumbai Indians, and Amelia Kerr, the wicket taker, the control in middle over that Mumbai Indians really needs. Mumbai Indians look like a very balanced team at this point. A well balanced team. It looks strong, and rightfully so. So I think this is the first WPL after India became the world champion, and I think the interest in women's cricket, पहली बार भारत क्योंकि चैंपियन बना वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप का, तो शायद जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो इस बार की वुमेन्स प्रीमियर लीग में शायद थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप चैंपियन बनते हैं तो काफी आई बॉल्स यू गेट मोर फॉलोइंग. तो मुझे लगता है काफी रोमांचक होगा, क्योंकि टीम्स काफी वेल बैलेंस है. जैसे आपने कहा, जो करंट चैंपियंस हैं, जो जो कप होल्डर्स हैं, मुंबई इंडियंस, वो ज्यादा उनके पिछले टीम और इस टीम में ज्यादा फेरबदलाव नहीं है. उन्होंने काफी कुछ रिटेन किया हुआ है, और स्पेशली अमिलिया कर को उन्होंने रिटेन किया. काफी महंगा पड़ा उनको, लेकिन आई थिंक इट इज वर्थ इट, बिकॉज दो शी कॉस्ट अबाउट आई थिंक 3.4 crores or something. I think it was worth it for them. And the core, I call them the core sisters, Amanjot Kaur and Harmanpreet Kaur. Both the cores are there. And I think, आपने अगर वर्ल्ड कप देखा होता तो शायद ये दोनों कोर का बहुत ही एक अहम कंट्रीब्यूशन था भारत के जीतने में. तो मेरे को लगता है टीम अच्छी है, बैलेंस्ड है. लेकिन जैसे हम दूसरी टीम्स के बारे में जैसे जैसे बात करेंगे, वैसे हम देखेंगे कि ये कांटे की टक्कर होने वाली है. तो ऐसा कोई भी एक टीम नहीं है जहां पे आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है. काफी एक जो बैलेंस होना चाहिए, एक जो द वेल राउंडेडनेस ऑफ ईच टीम apparently is there, and we will see as we go along for each of them. But Mumbai, I think, coming from एक जीतने के बाद जब कप्तान आता है, जो हरमनप्रीत कौर इज द विनिंग कैप्टन of the Indian team, right? So she's coming with a certain confidence. Manjot Kaur has been one of the star performers of that particular tournament. So when these people come in, and then they have, Haley Matthews and Amelia Kerr, and these are all Natalie Skiver, the legend by herself. So great team, and I think they will give a tough fight. They will definitely try to retain the cup. I am pretty sure of that. Yes, they are defending champions, so most definitely. Narayan sir, your comments? So इसमें क्या है कि एमिलिया कर को अच्छा पैसा दे के लिया, बट शी टुक 18 विकेट्स इन द लास्ट सीजन, द टॉप विकेट टेकर है ना. दूसरा क्या था कि नेट स्कीवर को भी पैसा अच्छा दिया है, एंड शी आल्सो स्कोर्ड अराउंड 523 रन्स इन द लास्ट सीजन 2025. प्लस ये भी देखना है, लॉरा वॉल्वर्ट है जो इनकी ओपनर है, साउथ अफ्रीका की है. शी आल्सो प्लेड सुपर्ब रोल इन दी वर्ल्ड कप which just ended,
एंड शी इज ऑल्सो द कैप्टन। तो क्या होता है जब आपके टीम में एक कैप्टन है ही और दूसरी कंट्री की भी अगर कोई मेंबर कैप्टन है तो उसका एक एडवांटेज फील्ड पे बहुत अच्छा मिलता है उनको, Yeah. बिकॉज उन्होंने भी लीड किया है साइड एंड शी हैज बीन अ सीजन्ड प्लेयर, शी अंडरस्टैंड द बिजनेस। तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट बम्बई को मिल रहा है। अच्छा, Yeah. बम्बई का क्या हुआ है, उन्होंने फर्स्ट सीजन जीता और थर्ड सीजन जीता। पहला सीजन तो फाइनल में उन्होंने व्हाइट वॉश किया। अच्छा, ये भी है कि तीनों सीजन में रनर अप दिल्ली कैपिटल ही है, तो अपने को वो Yes. डिस्कस अभी करना पड़ेगा कि इस बार दिल्ली कैपिटल कितना उभर के आती है, Yeah. एंड दिस टाइम दे हैव अगेन जेमिमा इज लीडिंग ओवर देयर, अपन बाद में लेते हैं। तो Yeah. पहला जो टूर्नामेंट 23 में जीता ना, दैट वाज विद 7 विकेट्स। लेकिन तीसरा टूर्नामेंट जो जीता दैट वाज वेरी स्क्रेप थ्रू, खाली 8 रन से जीते हैं, कोई लंबा विक्ट्री फाइनल में नहीं हुआ है। लेकिन ये भी देखना है, आई एग्री विद निखिल कि दे आर दी फ्रंट रनर्स एट द मोमेंट। उसके बाद में हरप्रीत कौर लीड कर रही है एंड शी लेड इंडिया टू विक्ट्री एट दिस वेन्यू ओनली। सो वो Yeah. एक पुराना एक ऑरा है उनके पास, महीने 2 महीने पुरानी बात है। तो ये एक उनको लीड करेगा। लेकिन क्या है, हर एक टीम 5-5 मैच खेल रही है, 2-2 मैच खेल रही है हर एक के साथ में, तो 10 मैच खेल रही है टोटल, सब मिला के 20 मैच है। तो ये WPL के अंदर या इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर क्या हो जाता है, 20 ओवर में किसी को पता नहीं चलता है। जैसे हेतवी ने कहा Yes. कि अभी तो रन रेट ठीक चल रहा है, उसके बाद में रन रेट डाउन हो गया। Triple. तो हाँ, तो रिकवरी का टाइम मिलना भी, उस रिकवरी ऑल्सो इज एन आर्ट, एंड वी Yeah. हैव सीन फॉर द लास्ट 1 year हाउ पीपल हैव रिकवर्ड एंड हाउ पीपल हैव गॉन डाउन। सो इट शुड बी अ गुड टूर्नामेंट। और जैसे निखिल बाबू ने कहा अभी कि श्रोताओं में भी बहुत जोश होगा। 11 मैच है, आई वॉज टोल्ड के स्टेडियम में, tickets are very fast selling, people are understanding, people want to see and watch। और वही बड़ोड़ा में होगा जब बाकी के 11 मैच वहां खेले जाएंगे। हेतवी। Definitely. Yes. That's the hope. And that's why we are here with WPL. We are following it. Next up is Royal Challengers Bangalore, my favorite team, whether it's men or women. I'm loyal to them. Uh, They come in with something they didn't always have, belief. Women's have won a World Cup as well, so that has been broken. A title win changes how you approach tight moments. They have turned out to be better. Smriti Mandana is the captain. Ellis Perry and Richa Ghosh, they give her enough support. They are the key players in the RCB. We call them dangerous because they thrive on momentum, but RCB has a pattern. I think even in women's team, it follows that once the match slips, it slips at from all the angles, all the perspectives. So, what do you think, Nikhil sir? How this I team think will perform? two of the big batters of the India squad are in this team, Smriti Mandana and Richa Ghosh. So Smriti Mandana at the top and Richa Yeah. Ghosh to pinch hitting towards the middle or the bottom. I think इससे जो उनके बैटिंग में जो स्ट्रेंथ आती है, आरसीबी में हमने विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी और अलग अलग जो ABD, हमेशा yeah. आरसीबी की मेंस टीम में भी देखा था कि जो बैटिंग स्ट्रेंथ उनकी है वो लेजेंडरी है। और Yeah. मेरे ख्याल से आरसीबी विमेंस टीम में भी मोटा मोटा हमें वही एक सॉर्ट ऑफ रवैया दिख रहा है कि जो बेस्ट बैट्समैन है उनके टॉप में, मिडिल में, लोअर ऑर्डर में इनके पास है। और व्हेन यू हैव I would say, Indian stalwart which are ignored in the World Cup, I hear. So you have Pooja Vastrakar, you have Radha Yadav. These people were ignored for the Indian team, but great players. तो इनकी भूख होगी एक प्रूव करने के लिए कि देखो आपने हमें इंडियन टीम में तो नहीं लिया, लेकिन हम भी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो इसमें पूजा वस्त्रकर, खास करके राधा यादव और श्रेयंका पाटिल, जो ये तीन, and they're brilliant players by the way. If you see the record, they have really dispensed themselves very well in the earlier matches in the earlier World Cups and in the earlier WPL. So I think talent combined with hunger is what RCB is coming with. Mumbai Indians will not be hungry because they already have the cup. So they have the talent, but maybe the hunger might be missing. RCB, talent, hunger. I think that's a very difficult combination to beat. So I wouldn't discount them. I wouldn't think that you should put them on the bottom of the table. They are somewhere there waiting to be counted. Yeah. And I think with international calendars lining up, everybody, I mean, this will be the platform to perform. It will like the national selection conversations will take place after this, and everybody will be here to prove their temperament. Absolutely. Yeah. Narayan, so, what do you have to say about RCB?
रन बना लिए हैं। जैसे निखिल ने कहा कि उनको वर्ल्ड कप में चांस नहीं मिला, बट शी इज ऑल्सो एंड मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटर है वो एक्चुअली, सो वो एक होगा। दूसरा, अरुंधति रेड्डी इज ऑल्सो गुड प्लेयर इन द टीम, एब्सोल्युटली, है ना। ऑलराउंडर। हाँ, ऑलराउंडर है। प्लस इफ यू सी एले एस्ली प्रेसी जो है ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है ना, तो शी हैज बीन इन द नेशनल टीम फॉर बोथ क्रिकेट एंड सॉकर, बोथ ऑफ देम, दोनों में खेली है। सो दैट itself, see the athletics of a player will be there, so they should be there. Then you have a Grace Harris, the Australian, she's also an all-rounder. And then Lauren Bell, that English mass, fast medium bowler. So उनका भी काफी मिक्स है बेसिकली देखा जाए तो। एंड तो अगर कोई टफ फाइट लग रहा है एट द मोमेंट, वन ऑफ द टीम्स वुड बी आरसीबी, वुड बी देयर ओवर देयर। Yes, और dark जैसे horse. बोथ स्मृति एंड रिचा डूइंग क्वाइट गुड, एंड रिचा का जो पिंच हिटिंग है, तो कहीं भी अगर 80-90 रन बनाने हैं 7-8 ओवर में, सो विकेट चली गई है 3-4, तो दे कैन एटलीस्ट लुक अपॉन रिचा, के रिचा आएगी और ये काम करके जाएगी। हाउ इंडिया इज टू लुक फॉर रिचा, दे आल्सो कैन लुक फॉर रिचा। तो ये अच्छा है, मेल तोल है, बढ़िया है। और लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, एंड ऑल द बेस्ट हेतवी फॉर ऑल द मैचेस ऑफ आरसीबी। Yes, thank you. I'll be looking forward to them. Next up, we have Delhi Capitals, the most debated team, and for good reasons. Yes, Shifali Verma, Jemima Rodriguez, and Marizan Cap. They are the key players here. I think Delhi is talented but fragile because they have skill, they are good on paper, but momentum affects their decisions. So when they are winning, but when they are losing, I don't know if like unlike Mumbai Indians, they don't have that capacity to bring back the match into their favor. It will be interesting to see what Delhi brings. I mean, I think what they're missing is either patience or clarity. Nikhil sir. I think, a very unique, if you look at the team build up, I think Delhi has by far the most match winners. हर एक मैच में आप देखेंगे कि कभी कभी एक टीम जो हारने वाली होती है वो जीत जाती है। और इसमें तब क्या होता है, एक जो प्लेयर है या तो बॉलर या बैटर जो भी है, वो खड़ा होके बोलती है या कि आई एम हियर, Nice. डोंट वरी। लुक एट द टीम, जस्ट लुक एट द नेम्स एंड लुक एट द इंडियन नेम्स फर्स्ट। शेफाली वर्मा, we know what she did in the World Cup, right? Sneh Rana, no need to talk about her at all. Sri Charni, I mean, Yeah. brilliant. She can turn the game anytime. And then, of course, the captain, Jemima Rodriguez. You don't have to talk anything about these four players. Look at the foreign players. Annabelle Sutherland, Marianne Cap, my God, I mean, Yes. she's been one of the most consistently brilliant players and match winners in the World Cup. So when you have six individual brilliant match winners in your team, I think you are really there. There's something, your team may not perform, but if one of these people stands up and excels on that particular day in her department, whether it's batting or bowling, you can vanquish the opposition, however strong a position they may be in at any given point of time. तो मुझे लगता है दिल्ली में जो गेम चेंजर होगा वो डिटरमिन करेगा कि दिल्ली इस टूर्नामेंट में किस तरह से परफॉर्म करेगी, क्योंकि इनका टीम का परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन वो एक जो बंदी है, that one person will have to make that difference between winning and losing. I think the six are there. Let's see how they perform, but one of them will have to stand up and be counted for every of those 11 matches that Narayan talked about. Yeah. So Shefali Verma's record in the last few days, after she was, picked because of an injury Latika's injury, yes. उसके बाद में इस नॉन स्टॉपेबल जैसे हो गया है, द वे शी इज प्लेड द अदर मैचेस पोस्ट द टूर्नामेंट, एवरीथिंग। तो प्लस जेमिमा's captainship would be put to test again, basically. She's a new captain, by the way. First match as a captain. First match as a captain. So it will be put to test. अभी तक क्या है, she has been supporting both the captain and the vice captain. अभी individually एक chance मिलता है आदमी को तो एक अलग है, and that aura has changed after the World Cup winning, and more so after they met the Prime Minister. Yes. अगर आप देखोगे Prime Minister, the maximum talking was done by Jemima over there. And her selfie is the
It has gone million hits today actually, you know. Yes. सो के उसने जो सेल्फी ली है, so that athletics, you know, stands out. एंड ये लास्ट वाला जो मैच था, दिल्ली खाली 8 रन से हारी है, मतलब लास्ट टूर्नामेंट का फाइनल हारी है, खाली 8 रन से हारी है. इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर विनिंग एंड देन दे लॉस्ट. सो एक वो भी था. तो आई अग्री विद निखिल के, एंड प्लस ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू श्री चरनी, एंड शी कैन चेंज द गेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ शी स्पेस द सेम स्पिरिट एंड एवरीथिंग. देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, यू नो. सो इट्स आल्सो ए, और उनके दिमाग में ये भी है कि एक हैट्रिक हो गई है हारने की, 23, 24, 25, अब की बार नहीं हारना है, बिकॉज हैट्रिक इज अ गुड, is That's a good usually a one. positive term in cricket, not otherwise, you know. Yes. Okay, hat-trick की बात करते हैं. The most interesting experiment this season has been UP Warriors. The way Meg Lanning arrival, it's not just about captaincy, it's about structure. They have Deepti Sharma, Grace Harris, great players. So UP seems like a wild card because उनका leadership last moment पे change हुआ. But let's see what results, what execution they do. So, this is very in direct contrast to what we spoke about Delhi. If you look at UP is an extremely well balanced team. It will not matter if one individual performs or not. If the 11 of them do their job, and I think this is going to be one of the teams very difficult to beat. I mean, look at the names. Yeah, I mean, Kranti God, we know how what a brilliant opening bowler she is. Young, hungry, has succeeded in doing what she does best, like surprising the opposition with her bounce, with her movement, and she's taken some of the best. I mean, the most amazing wickets in the World Cup. We saw that, right? Then you have Pratika Rawal. What is left to say about her? I mean, a great warrior. She gave Smriti Madhana the support that Smriti needed as an opener, and I think she got overshadowed by Smriti. But Pratika Rawal's contribution in the World Cup was fantastic, and she is a great bowler, by the way, great utility bowler. I don't know if you remember in the World Cup, she at some crucial time she bowled a few maidens and did pick up a 1 or 2 wickets when it was very important. So Pratika Rawal as a utility player, both as a opener, brilliant opener, and then coming into bowl as a change bowler or as a support bowler when things are not working out, she's fantastic. Harleen Dev, again a wild card there. She can she can play on her good day. She can play a brilliant innings and take everyone. दीप्ति शर्मा के बारे में तो क्या बोले हम, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है. तो मुझे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है यूपी वॉरियर्स का, एंड मैग लैनिंग बीइंग देयर to hold everybody together. Legendary Meg Lanning. There is nothing. I mean, I would be watching this team very, very closely because I think they have the potential to be the dark horse of these five teams. This is a team that can either be at the bottom of the table and that won't surprise you, or it can be the top of the table that also won't surprise you. Definitely. Narayan sir. So if you see, you know, in the inaugural 2023 WPL, UP were in the eliminator, they lost to Mumbai Indians and Mumbai Indians won. तो ऐसा नहीं है कि वो बॉटम ऑफ द लाइन चल रहे हैं बेसिकली. प्लस एक आई थिंक निखिल भाई मिस कर गए, इज उमा छेत्री, इफ शी इज द विकेट कीपर. Yeah, या तो she's very उमा good. छेत्री वाज इन द स्क्वाड ऑफ इंडिया Yes. एक्चुअली Yes. एज द रिजर्व विकेट कीपर, यू नो. Yeah. Yeah. आई थिंक एक आध मैच शायद उनको खेला खिलाया था. था बीच में, व्हाटएवर आई रिमेम्बर. And So that's when I think Richa Ghosh was injured. indisposed, yeah, you know. So and then I fully agree and support Nikhil saying Kranti God and Dipti Sharma can turn any match anywhere, you know. Yeah. ऐसा नहीं है, she is also a look alike Richa Ghosh only actually. Yes. तो वो भी बात अगर उठा दिया, and she is a very seasoned player. अभी उनको 12-13 साल हो गए हैं मतलब टूर्नामेंट क्रिकेट खेलते हुए. आई थिंक मोर देन दैट क्रिकेट खेलते हुए. तो शी अंडरस्टैंड्स, यू नो, बेसिकली. तो I fully agree. They are a solid team and they have maximized those 6 foreign players in best way. And let's see how it works out. Last but not the least, Gujarat Titans. They are rebuilding and they have been honest about it at the time of buying different players. Ashley Gardner, Beth Mooney, and Laura Woolward, the key players of Gujarat Titans. The
leader, has is an all-rounder with her ball, with her bat. She has been captain as well. Beth Mooney brings calm and reliability at the top. Rola Bulwart, we have seen her in this World Cup, and she adds the technical solidity. She has been great throughout. So they're underrated as such. They haven't been very loud in previous seasons, and I think their winning will depend upon their collective effort. I mean, there won't be not like moment of brilliance how we see in RCB. So it will be great to watch Gujarat Titans as well. I think Gujarat has picked the cream of the foreign players because all of the five or six who are there are legend in themselves, and I think they are in themselves. I think they allowed four, right, per team. So Yeah. any four that they pick from these six will be formidable for the opposition. From the Indian diaspora that they picked up, I think three, four good names are there, and they all play well. Renuka Singh, we know, is a great bowler. She did very well at WPL, and honestly, I love the way she in swings the ball with the right hand to the right hander. It's फिनोमिनल आई हैव नॉट मैंने आप अगर किसी मेल टीम में भी देखेंगे तो जो राइट आर्मर होता है एंड ओवर द विकेट आता है वो कभी राइट हैंडेड बैट्समैन को इन स्विंग नहीं कर पाता है बहुत मुश्किल है द वे शी डज इट आई मीन शी पिचेस आई थिंक शी मूव्स हर हैंड इन अ पर्टिकुलर वे एंड अ रिस्ट that surprises the batter and I think that in that armory that she's got that one magic trick she has is phenomenal and I just love her as the opening bowler for any team that plays T20 cricket. I think you have who else do you have? You have Rajeshri Gaikwad, who's also very good. You have Yastika Bhatia, whom you can't ignore. And you have Yes, Rajeshri Gaikwad, I already mentioned. I think she's yes, yes. fantastic. And she was also, Yeah. I think, ignored for the World World Cup. Cup. So I think, and Yastika also wasn't there. So I think these guys want to prove themselves again. They're great players, by the way, great track record. So again, Gujarat Giants have always started to deceive. They have never played to the potential. We hope, and let's hope that with the fantastic foreign players that they have, and I'm sure they must have paid big bucks for these people. Let's hope they are able to do justice to the amount that the team has committed to them. Yeah. Narayan sir. So if you see, in the last year also, 2025 edition, Gujarat they lost to Mumbai Indians in the eliminator, just like what UPL Warriors lost in the first one. तो ऐसा नहीं है कि बॉटम ऑफ द टेबल थे, दे आर डूइंग क्वाइट वेल अकॉर्डिंग टू मी, 3 नंबर पे आया तो अच्छा है. एंड इसमें अगर आप देखोगे तो खाली एक रेणुका ठाकुर सिंह इज समबडी हु हैज प्लेड द World Cup. इंडियन टीम स्क्वाड, हु इज पार्ट ऑफ दिस टीम एक्चुअली देखा जाए तो. बाकी सब इसमें से कोई आर नॉट देयर except this Jastika Bhatia. She was good earlier, again, and she's a good wicket keeper also. Batter to hai hai, but she's a good wicket keeper. So basically, she was sidelined in between. So this is a good chance for them to work out. और गुजरात का तो फ्लेवर होना ही चाहिए. एवरीबडी इज फ्रॉम गुजरात, सो वी आई थिंक गुजरात शुड हैव अ गुड चांस, है ना. Yes. अपने भी इवन दिस पैनल आल्सो टू और थ्री आर फ्रॉम गुजरात, सो है ना. Yes. गुजरात का गणित बैठना चाहिए इस बार. हाँ हाँ. The problem is that one Gujarat person loves Bangalore and one Gujarat person is staying That in was Mumbai. Mumbai. So, Yes. So between two of us, we have three teams. But at least, but Hetvi, anything can happen Yeah, in our T20 cricket. In fact, even in definitely. India, कुछ भी हो सकता है. The way Yeah. अभी आप इंटरनेशनल मैच देखो क्या हो रहा है, see how the Ashes में क्या हो रहा है basically. Yes. So let's see what happens. देखते हैं. So And I honestly believe that with the balance that is there in I think throughout the five teams that we discussed, it is that going to be that one game changer in every match that's going to make a difference. Somebody who suddenly stands up, who's not known for it, or who's known for it but does it once in 10, correct, correct, 20 correct. or 30 matches. If that thing happens, then that's the team that's going to win that day. Because the two teams largely will be balanced out, largely. But that one person is going to make a difference that game. It's going to be a balanced team with 189 and 187 and everybody playing well and not like किसको प्लेयर ऑफ द मैच बनना है वो नहीं होगा. प्लेयर ऑफ द मैच वही होने वाला है जो आउटशाइन करेगा सबको. Most of the time I think that's going to happen and I think that's going to make it's going to be very exciting because
the unpredictability of when you have two balanced teams playing and you can't really put your bet. अगर आप मुझे पूछेंगे यूपी और दिल्ली खेल रहे किसके ऊपर बेट करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा समझना उसे कि किसके ऊपर बेट करेंगे, Yeah. क्योंकि जो मेरिट पे है दोनों मोटा मोटा बराबर बराबर है। तो आप या Yeah. तो कॉइन टॉस करेंगे या इंस्टिंक्ट से जाएंगे या जो इमोशनल अपील है आपका उस पर जाएंगे आप। लेकिन मेरिट के ऊपर होगा तो एक ही एक प्लेयर होगा उस सारे 22 में से जो उस दिन फर्क जिसके खेलने से उस दिन मैच के परिणाम के ऊपर फर्क पड़ेगा। नहीं, Yeah. प्लस ये भी अपने को देखना है इसके अंदर कि एक ही स्टेडियम में 11 मैच हो रहे हैं बैक टू बैक, करेक्ट? तो ग्राउंड्समैन पिचेस कैसे बनाएगा, नंबर वन। और लग के कितना होगा बेसिकली, क्योंकि 4 पिच से ज्यादा यहाँ वहाँ नहीं खेल सकते हैं, तो अगर पांचवा मैच में वापस फर्स्ट में खेला जाएगा तो क्या होगा? 1 जनवरी अर्ली 4 बजे इतनी बारिश आई, जो उधर भी न्यू बॉम्बे में भी आई, इंडिया कहीं पे भी कुछ भी हो Yeah. सकता है। So Narayan, that brings to mind, what happens in a pitch that is used and overused. It typically breaks up. करेक्ट। क्योंकि अगर आपको पिच फ्लैट चाहिए, पिच यस। फर्म चाहिए और उसके ऊपर आप रोलर चला रहे हैं, तो करेक्ट। उसका उपयोग जो है वो एवरीडे नहीं हो सकता है। करेक्ट। द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग अ पिच ऑन अ डेली बेसिस, दैट देयर बी वेयर एंड टेयर, there'll be shoe marks, there'll be running foot marks on करेक्ट। the crease, outside the करेक्ट। crease. There'll करेक्ट। be the batsman who has made that line for the off stump or the. So when that happens, it largely it becomes a low scoring match because the bowler हावी हो जाता है बैटर करेक्ट। के ऊपर। करेक्ट। करेक्ट। और करेक्ट। खास करके स्पिन बॉलर जो हैं वो यस। हावी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये सारे मैचेस एक या दो पिचेस पे खेली जाएंगी तो पिछले पीछे वाली जो 5 मैचेस है, हाँ। पहले हाँ। 5 शायद हाँ। हाई हाँ। स्कोरिंग हो, पीछे वाली जो 6 7 8 9 10 11 मैचेस है वो शायद लो स्कोरिंग होगी। और जो पिछले साल भी हुआ 149 हाँ। मुंबई ने बनाया और फिर यस। 141 में 143। उन्होंने यस। 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 दिल्ली को ऑल आउट किया, वो भी एक यस। एक प्रतीक है इस करेक्ट। इस इस जजमेंट का। तो करेक्ट। शायद ये होना है। बट दैट्स आई थिंक व्हाट्स मेक T20 एक्साइटिंग। आई डोंट लाइक दोस 230 250 260 रन्स, थ्री बैट्समैन कमिंग एंड टेकिंग ऑल। अब जैसे आपने बोला बॉलिंग मशीन लगा दो, बॉल डालते जाओ छक्का मारते जाओ, बॉल डालते जाओ छक्का मार, वो नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू Yeah. बी a skill, great bowling, great batting, facing that bowling, and whoever bats well that day is going to win. I think that's going to happen, and I'm looking forward to this WPL very, very closely because this is the first time that all these players from the India 11 are coming out as world champions. And let's see what impact that has on the WPL and how exciting they make this series. टू मोर थिंग्स, वन इज विनिंग ऑफ टॉस एंड देन टेकिंग अ कॉल कि पहला बैटिंग करना है और बाद में बॉलिंग करना है, या पहले बॉलिंग करना है बाद में बैटिंग करना है। और क्या होगा, जिस तरह से वो स्टेडियम है, उधर आजू बाजू सब खुला है, तो ड्यू विल ऑलवेज बी देयर इन द सेकंड पोर्शन। तो वो एक, दैट ये भी एक नपा तुपा होगा। प्लस क्या है, a new captain like Jemima, has to think loud. The management of that team also has to think along with the captain and see how to work out कैसे क्या करना है। कि बिकॉज क्या है, क्रिकेट प्लेयर्स के अलावा सराउंडिंग और इकोसिस्टम के साथ में भी बहुत जरूरी है खेलना, कि भाई किसे करना वगैरह। क्योंकि क्या होगा, आपने स्कोर भी कर दिया और बाद में आपके फील्डर के हाथ में या बॉलर के हाथ में बॉल नहीं आ रही है ड्यू के कारण, तो आप क्या कर लोगे? नथिंग डू मच मच एक्चुअली। और इसमें से सबके सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ऐसे नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल हु हैव बीन पिक्ड अप, दे हैव टू शोकेस एंड Yes, yes. दे मे बी सपोर्टिंग। मैं अभी वो वैभव सूर्यवंशी को देख रहा हूँ, आई जस्ट गो आउट टू टेक अ कॉल, तो मालूम पड़ा 40 का 70 हो गया है उसका 2 बॉल के अंदर। हाँ। मैं देख रहा Yeah. था, अभी लास्ट वीक ही देख रहा था, और कल भी मेरा मिस हो गया। मैं थोड़ा सा बाहर गया कॉल लेने के लिए, तो देखा 40 का उसका 72 पहुंच गया, और सब छक्के ही मार रहा है, छक्के चौके के अलावा मार ही नहीं रहा है। सो Absolutely. हाँ, सो वी एनीथिंग है, एंड आई एम आल्सो ईगरली वेटिंग। एंड अब की बार जैसे निखिल ने कहा, वर्ल्ड चैंपियंस आ रहे हैं तो उनका एक अलग है। प्लस first 11 matches are played on a in a stadium where they have lifted the trophy, तो एक वो अलग ही एक आधार होता है एक्चुअली। Yeah. मैं भी जब सीए पास किया, तो जब मेरे को रिजल्ट आया, फर्स्ट आई वेंट टू द सेंटर वेयर आई गेव द फाइनल एग्जाम। वहां Yeah. जाके मैंने मस्तक नमन किए। मैं बोला इंस्टीट्यूट ने तो किया है, लेकिन ये जगह पे मैंने सब एग्जाम दिए हैं, तो मैं वहां जाके पहले मस्तक नमक करके आया। तो वैसे अगर यहाँ जीते हैं, सो दे विल गिव बैक, एंड आई थिंक the audience would be fantastic. I'm also thinking of going to see one match. Let's see how Oh, lovely. Maybe you can report live from there. it Yes.
See, the only issue is that parking is a big issue. Yes. And in the night, when you come, 11:30, you take 45 minutes to reach where the parking is. You're right. And they don't allow you to park near, you have to walk all the way. Yeah. बहुत दूर है यार. I've been to one of the T20s many years ago, but it's very नहीं inconvenient. वो शनिवार को ही जाएंगे और वहीं कोई होटल में रह जाएंगे, बस. तो वही है, संडे को दर्शन कर लेंगे तिरुपति का उधर येऊर में और आ जाएंगे. Chali, let's hope we get to enjoy that Nazara of Yes, Narayan yes. Pasari screaming and shouting for his favorite team from the stadium live, and us watching him from our living room on the television screen. Yes. So at Cricket TV, I think what we'll be following is the young and uncapped players playing without fear. I mean, and benefiting from it. We'll see what happens there. We always find a new emerging player out of WPL, Premier Leagues, or even IPL. We have seen that. So let's see. To wrap it up, the WPL has crossed an important line. It's no longer about opportunity, it's about accountability. Teams that start well build belief. Teams that hesitate will feel pressure immediately. And at Cricket TV, we will be following the league match by match. We will be breaking it down with what actually matters, not just what trends. And big thank you to Narayan sir, to Nikhil sir. So before we end, Tomorrow's match. one team, Narayan, one team. Name one team जो जीतेगी. RCB. RCB. UP. Ooh, RCB UP. yes. 11 मैचेस के बाद फिर से आएंगे. We'll see. और Yes. कल का tomorrow the match is inaugural. First match is between RCB and Mumbai RCB in Indians Mumbai. Yeah. at 7:30 at DY Patil. So Yeah. let's see how it works out. Let's So see. pick But I Mumbai think with UP, pick I'm one. betting on UP as a dark horse. No, for tomorrow, pick one. कल नहीं, मैं तो चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ. Who will lift the cup? Pura. I Okay. am Who will supporting lift the no, I'm bulldozer. saying who will lift the cup. So I'm saying UP. Then I am supporting the bulldozer. Bulldozer. All of you, all of us. All of us are supporting the Yogi. Oh my God. All right. So that's a consensus that we arrived at, surprisingly. Come on, that's good. Good, great. सबको डर So लगता है let's सर. see where that goes. I think it'll be a good thing because UP doesn't have a team in the men's side, so there is no UP team as such. So it's good that the largest state of India comes on the map, on the international map with the women's team, and that's going to be brilliant if at all it Brilliant. happens. Let's see. Yes, yes. So Yeah. thank you for watching Cricket TV. Please like, share, and subscribe. Comment down your favorite team, who you are rooting for this season, and we'll get back to you tomorrow with a breakup of why Mumbai or RCB won or lost. Let's see. Thank you. Thank you. आओ देखे क्रिकेट टीवी जहां मिलेगी क्रिकेट की सारी बातें जहां जोश भी है जहां होश भी है जहां क्रिकेट है आओ देखे क्रिकेट